संजीव तो अच्छी Good morning everyone. Good morning Sanjeev. Good morning Manas. So आज आम लेसन स्टार्ट करवा तो ता पूर्व कही दिए कि StudyIQ तरफ जो प्रगति बैच रही जोटा कि OCS प्रिलिम्स और मेंस में रही राइट. The batch is going on obviously and जो माने interested अच्छो you can enroll for this batch already चलती जोटा 5th match रो start है and this will going on ये batch 1 batch 2 एमती चलते हो. Good morning विद्युत. चलो फिर तो बाकी कोड तो तुम देखी पारिबो SSLIV माई कोड यू कैन यूज अदर्स जार जो फैकल्टी तुमको पसंद तांको कोड यूज करि पारिबो and get the maximum discounts जहाँ भी ही पारिबो राइट. get the maximum discount. अच्छा वॉइस ठीक आछी राइट मानस वॉइस ठीक आछी. तो देखो फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा so obviously कि ICC tournament the last night in Dubai तो जानते हो जो ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया ओन एंड बैक टू बैक जी आम कह 2024 आम T20 वर्ल्ड कप कथा नहीं जाओ देन हियर इन चैंपियन ट्रॉफी ता पूर्वर 50 ओवर वर्ल्ड कप तो आम फाइनल हारी थे बट किंतु बाकी सब मैच जीतते से गोटे मैच ही हारिया को पड़ता जदि देखा आम सो दैट वाज द रीजन. बाकी तुम देखो कि चैंपियन ट्रॉफी एथपाई मु नहीं बिकज ICC रो जो इवेंट गुड़ा से पचार थाए जमती कि UPSC क्रिकेट रू साधारणतः UPSC पचारे ना बट UPSC कौन पचारे जदि किसी वर्ल्ड कप जीतीगला तो गोटे बहुत बड़ा इवेंट है ताले से पचार ना पचार बट यही वर्ष जो UPSC प्रिलिम्स हम 2025 May 25 ना 28 जो डेट अच्छी ओलंपिक रे क्वेश्चन आसवर चांसेस बहुत अच्छी कारण जेहेतु ओलंपिक सरी 2024 जो ओलंपिक होता तो से ओलंपिक रो क्वेश्चंस आसवर चांस अच्छे. तो स्पोर्ट्स को लेकिन एबे क्वेश्चन पचारुंट आगुरी पचारू नथिले बट एबे स्पोर्ट्स को लेकिन पचारुंट तो सेटा तुम विंटर गेम हो पारे राइट किसी स्कीम हो पारे जमी खेलो इंडिया को लेकिन क्वेश्चन पचार तो स्कीम्स तो स्पोर्ट्स रिलेटेड टिके अवेयरनेस हमको दरकार चाहे कि खेलो इंडिया होगला. तो ये चैंपियन ट्रॉफी जब देखो तो चैंपियन ट्रॉफी रे तुम हिस्ट्री पढ़ी जीव एमती खाली ना कि चैंपियन ट्रॉफी के इंडिया चैंपियन हो जाइए एंड से पढ़ले हम. दिस इज द थर्ड टाइम दैट इंडिया बिकम द चैंपियन एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चैंपियन ट्रॉफी नाउ एंड द इंडियंस बैक राइट हाईएस्ट नंबर. बट फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी किए जीती थला ये तुमको क्वेश्चन पचार जो कि व्हिच टीम वोन द फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी. इट वाज 1998 द चैंपियन ट्रॉफी स्टार्टेड देन and South Africa won the first trophy. South Africa that से समय तो जानते हो कि ग्रेम स्मिथ कथा नहीं जाओ कि सॉम पलक कथा नहीं जाओ मखाई एंटीनी राइट जदि जो मैंने जानी थे से मन को तो these were the bowlers that times they were the fierce bowler of that time राइट. तो मखाई एंटीनी सॉन पलक ये बहुत खतरनाक बोलर थे टाइम रे साउथ अफ्रिकार सब भल पेस बोलर ही प्रोड्यूस करे. तो सेबेठू 1998 रु आम कह चलती चैंपियन ट्रॉफी बट 2017 रे ICC थरे भाभी थे कि चैंपियन ट्रॉफी को बंद करदे तापर 2024 डिसीजन ने 3-4 के ना चैंपियन ट्रॉफी हम राइट. तो ये मैंने 2017 पर भावुले कि खत्म करदे कहीं 17 चैंपियन ट्रॉफी किए जीतला ऑस्ट्रेलिया राइट ऑस्ट्रेलिया जीतला तो सहीटा जहाँ भी से देखीदेव ना ये तुमको किसी वैल्यूएटेड कराई सिंस 1998 रू 2005 भितर केतेटा चैंपियन ट्रॉफी है. द ICC इवेंट ओबियसली द प्रेस्टिजियस इवेंट था
is a prestigious one-day international knockout international introduced in 1998, and the tournament was later known as the ICC knockout tournament. तो आर ना है कौन ICC knockout tournament एटा मन रखियो टिके कना आ ना होची ICC knockout tournament and from the 2002 onwards को कुहा गला. It was named as the Champion Trophy. तापरे कौन हैला 2002 राकू चैंपियन ट्रॉफी ना करा गला. It was initially थिला ICC knockout tournament, then हैला चैंपियन ट्रॉफी. इन बाकी ये हमें देखि परिबा कि ये आर्टिकल से तुम देखि परिबो 1998 टू 2005 भितर विनर्स किए रही. देखो ये तो मु तुमको कहि देली राइट. फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस एज ए नॉकआउट, देन ये कौन हैला चैंपियन ट्रॉफी सिंस 2002. तापर तुम देखि परिबो कि इंडिया द ओनली टीम जोटा कि 3 थर जीती 2002, 2013 एंड 2025 राइट. तो ये 3 थर इंडिया देख पारो, बट ऑस्ट्रेलिया इज द सेकंड 2006 एंड 2009 हम देखिबा. ऑस्ट्रेलिया ओन 2 ट्रॉफीज 2 टाइम्स 2006 2009. तापर जीते नहीं ऑस्ट्रेलिया 2017 सॉरी पाकिस्तान जीतला, सॉरी 2017 पाकिस्तान जीतला ना. अरे इट वाज पाकिस्तान 2017 पाकिस्तान जीतला बा इंडिया को हरैतला. इंग्लैंड रहीतला मैच थला कोठी इंग्लैंड रो शायद ओवल्स रे थिला. तो सेटा इंडिया हारितला पाकिस्तान ठो लास्ट टाइम राइट. बाकी चेक कर दो दी थर ही हेइथो ऑस्ट्रेलिया 2 टाइम्स कना इंडिया सब टू हाईएस्ट 3 टाइम्स. तो ये जो 2006 2009 तो देखि परियो तमे एई टाइम रे जो चैंपियन ट्रॉफी होतला सेई टाइम रे बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया टीम सेई टाइम रे सबटू स्ट्रांगेस्ट टीम थिला एवर क्रिकेट हैज एवर हैव. मतलब क्रिकेट जदि कौन सी क्रिकेट रे जदि सबटू स्ट्रांगेस्ट टीम आज पर्यंत दुनिया रे से होची ऑस्ट्रेलिया. और सेई टाइम रे ऑस्ट्रेलिया एई टाइम रो नो को टाइम रो 1999 रु नै कि 2009 एई जो माने 10 वर्ष माने 1998 भी धरी था से जो 10 वर्ष ठू नहीं कि हमें 2009 2010 जाए पूरा वर्ल्ड क्रिकेट को भयंकर डोमिनेट करी. आजिकल काली गोटे जन को मेमे गोटे मेमे चलुनी कि आजिकल जो पिला माने आकु दे ट्राविस हेड को देखले डरी जाउची. हाँ कि ट्राविस हेड कहना से जो फाइनल रे मारथला इंडिया विरुद्ध रे कहला ताले उस जमाने का अगर रिकी पॉन्टिंग एडम गिलक्रिस्ट साइमन हैला आउ रहला किए तमरो मैथ्यू हेडेन से मान को जे देखि थांता ताले कोन हेई थांता. से गोटे ही सब ट्राविस हेड से सब गोटे ट्राविस हेड. तो कहा को आउट करियो गोटे के आउट खेले आउ गोटे ए सब गोटे मैच विनर. ता बाद रे आसीबो तमरो माई हसी ए तो परे आसिले जदियो सेतबेले थिला तांकर कोन तांको ना कोन माई हसी पूर्वरु माई हसी तो 2004 बेल को आसिले ये 4-5 को आसिले माई हसी. पर ता पूर्व हाँ 4 बेल को आसिले 3-4 बेल को आसिले माई हसी. पर ता पूर्व आउ जन थे तांको नाटा मन पड़ुनी से माई हसी रोलटा ही निभाउथले से. तो ता से मन के सेतबेले माने जो कहते कि ता बाद रे मैग्राथ सेनवन ब्रेटली ए बुझी पड़थो आउ थे कोन गिलेस्पी और तांको किए खेलिवो ये सब तो महान बॉलर और बैट्समैन सेतमे से माने जितुथले. तेणु गोटे टीम केतल जिते कॉम्बिनेशन एफर्ट रे बॉलर और बॉलिंग आमर सब कौन बैटिंग भल बट एबे आमर टिके बॉलिंग भल होची बोली जितुचंती नहले ये भी जीति पार न थांते. जा भी हो 2002 रे देख कौन होईची 2002 रे जो रेन होता श्रीलंका इंडिया जो इंडिया 2002 रे जोटा जीतीला सेटा टाई होता कहीं रेन वर्षा जो सेटा टाई होता तेणु श्रीलंका इंडिया जॉइंट विनर होते. तापरे जो देखा यही आईसीसी जो इवेंट है आम चैंपियन ट्रॉफी रो हाईएस्ट स्कोर तुम देखिपर किए करते 362 बाय न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट आफ्रिका कि साउथ आफ्रिका विरुद्ध करते एबे 2025 रे जो थे राचिंद्र एंड केन दी जन सेंचुरी करते. देन हाईएस्ट रन चेज ऑस्ट्रेलिया क्या हर ऑस्ट्रेलिया साउथ आफ्रिका run chase that is held by Australia 356 while chasing the 352 target against England in 2025. एई वर्ष ही जो थ्री तांकर से जो प्लेयरटा ना कोन बेंडॉक 160 ना केते मारतला 167 ना केते बेंडॉक. देन आमे देखिबा द स्कोर हाईएस्ट कोन रहिछि इब्राहिम जादरन अफगानिस्तान मस्त खेल जानछ अफगानिस्तान नॉकआउट करी बाहर कर देला का इंग्लैंड को बैक टू बैक
आईसीसी इवेंट रे तो तापर इंडिया क्वालिफाई कला एंड दिस इज द इंडिया दैट सक्सेसिवली आम कहबा इंडिया केते थरो फाइनल को जाईची देखो 2013 2017 2025 बैक टू बैक 2013 2017 2025 बैक टू बैक चैंपियन ट्रॉफी रे आम कहबा फाइनल खेलीचे एंड अनफॉर्चुनेटली 3टारू 2टा हमको ट्रॉफी मिली 17टा आम पाकिस्तान टू हारी थे जोटा कि कहली इंग्लैंड खेला होता so this is all about champion trophy now comes to MCQ which country has won the most ICC champion trophy as of now तो आंसर तेबे जना पड़थियो समस्त को राइट आंसर तेबे जना पड़िथो गुड मॉर्निंग कविता मोनालिका तेबे तो आंसर जना पड़िथो which country has won maximum ICC champion trophy तो ICC champion trophy it was 1998 introduced as a knockout match or ICC event then it was then 2002 that it's turned to be कौन करागला चैंपियन ट्रॉफी बोली कहगला एंड दैट टाइम तापर इंडिया जितला केबे ताले हम कहबा फर्स्ट टाइम इंडिया केबे जितला आईसीसी मतलब चैंपियन ट्रॉफी इट वाज आल्सो 2002 ही तो थिला इट वाज आल्सो 2002 फर्स्ट टाइम मध्य 2002 एंड से समय रे हमरो करिथिले तो से समय सौरभ गांगुली एंड युवराज सिंह दे वर द हीरो ऑफ द मैच ते माने बहुत भल खेलती तो गोटे ही प्लेयर जानी आज पर्यंत इंडिया युवराज सिंह जैसे चैंपियन ट्रॉफी नहीं जो कि वर्ल्ड कप कथा ना जो T20 द साइलेंट किलर ऑफ इंडिया तो नेक्स्ट तो आंसर ओबियसली जानी सारी ये कौन ऑस्ट्रेलिया ही जाइए ये भूल है गलत है ये गलत है आंसर ये इंडिया 3 टाइम्स राइट तो इंडिया हूँ 3 टाइम्स क्या बुझीपार यहाँ चेंज है अब तो ये इंडिया 3 टाइम्स राइट तो इंडिया है 2002 जोटा कि जॉइंट ही था देन 2013 एंड 2025 3 थर राइट बट 2017 एंड 2000 तुम कौन रहा आ गोटे मझे जो बैक टू बैक्स आम कह जाइए कौन हाँ 2013 2017 एंड 2025 3 टाइम्स बैक टू बैक फाइनल खेलते विच कंट्री हॉस्टेड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2020 ये 17 ये 17 कथा देख एटा करेक्ट कर दो एटा इंडिया 3 टाइम्स मु कहि एटा इंडिया 3 टाइम्स विच कंट्री हॉस्टेड 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यार आंसर मते मु डिस्कशन रे कहि छी एंड पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इट्स व्हाट हाँ को आंसर देखियो विद्युत 2002 संजीव 2002 ट्राई करो it's England yes is what England the right answer is it's England किए England एटा हम डिस्कस करथला ओटे पूर्वरु कहउथली it's a what England right answer that means मानस विद्युत मोनालिका संजीव एंड कविता so it's what England next देखा वुमेन्स तो हम जानते हो कि वुमेन्स डे जाइए भी रिसेंटली राइट एंड सुभद्रा योजना 5,000 टंका मिली थो समस्त को ओके नहीं मतलब झील मान को राइट तो जहाँ भी हो तो बर्तमान पीएम कौन कहते शुण से आम जी देखा कि पीएम से कहते सुभद्रा योजना को मुझे आसबनी बट हियर पीएम कहते कि जो ओबेसिटी इंडिया रे बढ़ी बढ़ी जाऊँगी राइट इंडिया रे कौन हो ओबेसिटी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो ये गोटे प्रॉब्लम्स आसिक पहुँची पीएम मोदी अर्जेस टू कट द ऑयल इनटेक इन द किचन तो देख से सुभद्रा जिते बड़े आम कहवा ओबियसली वुमेन्स डे रे आम जो कहे कि वुमेन्स डे रे से कहते कि माने जो भौणी मान को से कहवा कथा कि वुमेन्स मान को कि कट द किचन ऑयल को कट कर क्या ओबेसिटी बहुत बढ़ुची एंड देख it is expected कि 44 crores Indian may be suffering from obesity by 2050
by 2050 right जदि आम कहवा 44 इंडियन crore that is the crore will be suffer from the obesity अच्छा भाव ये 44 कोटी लगभग आम कहवा एते लोक जदि ओबेसिटी रु सफर हबो that would be a huge challenge right तो ओबेसिटी गोटे एपिडेमिक्स रे कन्वर्ट हो जाउछि ना इट्स कन्वर्टिंग इनटू एन एपिडेमिक आम कहवा तेणु ये भी गोटे डिफिकल्ट सिचुएशंस आम पाई तेणु करके पीएम निजे कहउछंती मोदी अर्जेस and flags impeding obesity crisis in India called obesity the root cause of many diseases जेमति कि तमरो that what आमे कहबा डायबिटीज कथा नै जो हाइपरटेंशन कथा नै जो राइट ये सब आमे देखाउची कारण यारी जगो ही बिकॉज ऑफ ओबेसिटी प्लस ओबेसिटी द्वारा कोन होइजबो लोकंकर लाइफ स्पान मध्ये कमी जबो अदर डिजीजेस आसी जबो खास करी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मध्ये आसी जो फिजिकल मूवमेंट कमी जबो राइट तो हाइपरटेंशन आसी जो जहाँ को हम ब्लड प्रेशर कहचे सुगर ब्लड प्रेशर जॉइंट पेन्स राइट ये सब तुम आसी जो तो ओबेसिटी जो एंड दिस इज द बट डेटा टिके मन रखो कि 44 crores एक्सपेक्टेड बाय 2050 ओबेसिटी ना आउ गोटे जिनस हम कहि पारे तो ओबेसिटी इट्स ए माल न्यूट्रिशन ध्यान से मरको ओबेसिटी इट्स ए माल न्यूट्रिशन ओबेसिटी नाइ कि से बहुत ताको खाया को मिलुची बोली कारण तार डाइवर्सिटी हेई पारुनी फूड रो डाइवर्सिटी हेई पारुनी एंड दैट इज व्हाई तो ओबेसिटी होची मेन रूट कॉज ऑफ द डिफरेंट हेल्थ आम कहबा प्रॉब्लम्स जेमति मु कहले हाइपरटेंशन कथा नै जो सुगर कथा नै जो सो दीज आर द थिंग्स दैट इज व्हाई पीएम मोदी रिक्वेस्ट करछोंती कि ऑयल इनटेक कमै दियो एंड फास्ट फूड खास करिए में कहबा तो ये ओबेसिटी रो सिनेरियो टिके देखि दियो हाउ हियर इज हाउ द ओबेसिटी सिनेरियो तो ओबेसिटी सिनेरियो जदि देखबा इंडियाज वेट प्रॉब्लम्स 1 out of 4 person obese now so this is the data that 44 crores हमें कहबा and every 1 person that means हमें कहबा 1 out of 4 person is obese तो मतलब प्रत्येक 4 जन रु जने होचंती ओबेसिटी रो द्वारा सफर होची इंडिया रे राइट एज वाइज जदि हमें देखबा ओबेसिटी कोठी तुमको एज वाइज जदि तुमको देखा जो राइट एज वाइज देखो 2015 16 दिएछि 2019 रु हम देखिया 21 दिया देछि डेटा एज वाइज हमें देखि परिबा एज वाइज जोटा ओबेसिटी हमें देखिबा सो 30 40 टू 49 एज रे हमको देखाउछि कि सबटु अधिक ओबेसिटी देखा जाउछि ना धीरे धीरे देखियो एज 15 टू 19 4.2% 20 टू 29 14.2% धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउछि आ जेतर 40 50 को एज आसुछि मैक्सिमम ओबेसिटी तो ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग विथ द इंक्रीजिंग एज सहित जदि हम देखिबा तो ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग राइट एंड अर्बन एरिया रे देखो ओबेसिटी सबुठु अधिक दैट इज 31 पॉइंट हम कहबा तो अकॉर्डिंग टू द जदि हम लेटेस्ट कथा कहबा तो जेमति तमर 2021 डेटा अनुसार 33.3% रहउचंती अर्बन एरिया रे एंड रूरल एरिया रे 19 पॉइंट समथिंग रहउची तो ये हमको देखा जो तो ओबेसिटी अर्बन एरिया रे मोर ओबेस पर्सन तो डेटा टिके देखिथबो रूरल अर्बन जो कोइंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी ऑब्वियसली रूरल एरिया रे कम होबो अर्बन एरिया इज हैविंग मोर ओबेस पर्सन राइट ओबेसिटी अधिक हमको देखा जो कोठी अर्बन एरियाज सो अर्बन एरिया इज हैविंग मोर ओबेस पर्सन एज कंपेयर टू द रूरल एरिया देखा ओबेसिटी रो रीजन कोन ओबेसिटी रो रीजन होची कोन ता पई बहुत सारा रीजन है परे एक तो जो तुम कोविड टाइम रे खास कर जो कोविड हो गला ना कोविड रो ओबेसिटी अधिक बढ़ी गला लोकंकर कारण फिजिकल एक्टिविटीज कमी गला वर्क फ्रॉम होम हैला तो से जो मूवमेंट कमी गला लोकंकर रेस्ट्रिक्शन लागिला तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन हम कहि परिबा देन एडी को आउची के देखो बाय 2030 1 in every 5 women and 1 in every 7 women are predicted to that means live with obesity ध्यान से मन रखो by 2030 ये गोटे डेटा कहूची कि 1 in every 5 women प्रत्येक 5 जन स्त्री लोक रे जने स्त्री लोक ओबेस रहिबो और प्रत्येक 7 जन रु जने मेल पर्सन विल बी ओबेस पर्सन by 2030 मतलब डेटा सेज तो तेणु करके ये डेटा हमें देखि परिबा तो ये डेटा तुमको लिखे छी बाय 2030 व्हाट वुड बी एंड बाय हमें देखितली ये डेटा देखितले बाय 2050 देयर वुड बी 44 crore ओबेस पर्सन हमको देखा जेबो
तो ये जो ओबेसिटी गोटे साइलेंट एपिडेमिक्स धीरे 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 इंडियन सोसाइटी को मारुचे साइलेंट एपिडेमिक ये गोटे ये आर पछरे बहुत खर्च हम ना मेडिकल खर्च हम फैमिली तो जमती देखिपर तुम ये जो अनंत अंबानी राइट ओबेस तो सी डिजीज कमेबा बहुत डिफिकल्ट राइट अनंत अंबानी कथा देखिपर तो ओबेसिटी इज अ डिजीज राइट ये क्या भी हो पारे सो दैट इज वाई बट एक्सरसाइज फिजिकल मूवमेंट वगैरह बहुत दरकार तेणुक इंडिया को कौन करा पड़ो तो ये तुम देखिए से खाइबा कथा आजिकल जो फूड हैबिट सब बर्गर वगैरह सो दिस आर द हाई फैट फूड रिलेटेड तेणु ईट गुड एंड स्टे वेल तो ये ओबेसिटी आम देखीदे कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आम देखीचे जमती कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखा देयर वुड बी डायबिटीज देयर वुड बी मस्कुलर डिसऑर्डर स्पेशली दैट इज द व्हाट ऑस्टियो thides osteoids there would be cancers specially that is endometrials then breast cancer ovarian cancer liver cancer gallbladders kidney disease ये सब प्रॉब्लम्स देखा राइट दीज आर द प्रॉब्लम्स जोटा आम कह नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस राइट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अधिक देखा एंड एथरे इंडिया मध्य कैपिटल हो ना नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस हम देखी आप देखो ओबेसिटी को कमेया कौन करा एक तो डाइवर्सिटी ऑफ फूड दरकार गोटे प्रकार फूड खाइले हेनी देन एक्सरसाइज बहुत जरूरी राइट एक्सरसाइज बहुत जरूरी मिनिमम तो सप्ताह को कह जाए कि इन ए वीक एटलिस्ट 4 आवर्स एक्सरसाइज करवा दरकार मिनिममटा 4 आवर्स तुम मिनिमम रहा दरकार ये देख तो अंडर विच मिनिस्ट्री डज द फसाई ऑपरेट्स फसाई क्या अंडर काम करता है ट्राई करो देखिए Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Family, Ministry of Consumer Affairs and Ministry of Food Processing India by Industries. Sorry. So it would be ताले देखिए आंसर कौन आंसर दउची फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गुड मॉर्निंग संजीव कौची डी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री everybody is after the D but answer will be कौन B answer will be B तो आंसर देखिए आंसर कौन हम answer will be B so answer would be B that is what Ministry of Health and Family Welfare so FSSAI that is the Food Safety Standard Authority of India Food Safety Standard Authority of India FSSAI ये UPSC पचारिछि याकू FSSAI कौन पई आसे न्यूज रे बिकॉज ये गोटे सपोज तुम जाइछ कि गोटे मूंग डाल खाइबो पैकेट सेठी लिखाई था केते कैलोरी केते सॉल्ट केते सुगार सब लिखाई था ना सेटा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ FSSAI मतलब जहाँ पैकेज आइटम फूड तुम मार्केट में मिलूची ताकू रेगुलेट किए करूची दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय FSSAI FSSAI ताकू रेगुलेट करूची तार क्वालिटी को चेक करंती राइट नेक्स्ट जीवा में ताले द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन which year that means sorry which act governs the FSSAI which act governs the FSSAI को मतलब FSSAI को act under आसे कौन देख दियो that is the Essential Commodities Act 1955 then Prevention of the Food Adulteration 1954 Food Safety and Standard Act 2006 Consumer Protection Act 2019 these all acts are important देखो जहाँ भी information सब important information because at the end of the day this small information will build up your right the base to write a good answer suppose तुम health ऊपर लिखुछ कौन से गोटे आंसर मेंस रे you can add the FSSAI's role FSSAI's role कौन
से तुम लिखिपर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कोविड-19 बेले आपको इन्वोक करा जायथला इट वाज इन्वोक्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सो आंसर वुड बी व्हाट so it's a Sanjeev C, Manas C, Unicorn C, everybody is running after C. So let's see also the answer would be what? C. The answer would be also C. That is the Food Standard and Safety Act 2006. Food Standard and Safety Act 2006. The answer would be right. Then Essential Commodities Act कौन? देखा essential ताले आउट के हम डिस्कस कर दो आई थे ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 रही यार मीनिंग कौन देख एसेंशियल कमोडिटीज है जमती मेडिसिन्स तो एसेंशियल कमोडिटीज रो सेमती लिस्ट किछि आज ऑफ नाउ अच्छी तो लिस्ट बट तार किछि फिक्स न थाए देख एसेंशियल कमोडिटीज ता तुम कहो सर मु पिंधिबा मोर कपड़ा बिटा एसेंशियल तुम कहो सर मोते एजुकेशन भी एसेंशियल तो एसेंशियल तो दुनिया रो सब मोते पानी पीबी सर सेटा भी एसेंशियल मु घर रही घरटा भी एसेंशियल ताले कौन दुनिया सब एसेंशियल कमोडिटीज की तुम कहो सर मत गोटे बाइक दरकार से भी एसेंशियल तो ऑल आर नॉट एसेंशियल अकॉर्डिंग टू वी और अकॉर्डिंग टू यू एंड मी सो एसेंशियल व्हाट वुड बी एसेंशियल कम्युनिटी और विच वुड बी एसेंशियल कम्युनिटी विच विल बी add to the essential commodity list or not that depends on the government on the basis of situation on the basis of what situation जेमती कि कोविड-19 टाइम रे शायद समस्त मन रखिथबो जेतर फास्ट कोविड-19 आसला गोटे गोटे मास्क 200 टका 250 टंका बिक्री है हाँ कि नहीं एक कथा शायद समस्ते मन थी सडनली तापर गवर्नमेंट कौन कले गवर्नमेंट से जो मास्क को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अंडर ऐड करदे कहले आज वंस कौन सी कमोडिटी जदि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रे ऐड हो तार प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करिवो ध्यान से मन रखो any goods and services which would be added to the Essential Commodities Act that to be 1955 that means that product will be controlled the price of that product will be controlled by whom that would be the government will decide that means once the product is added you can't hoard it and the hoarding would not be allowed there would be the what obviously the police would be in action and the price will be also determined by the government the selling price एति टंका तापर देखो कौन है जितना मास्क रो बहुत जरूरी पड़ला तो गवर्नमेंट कहले भाई मास्क 25 टंका जाओ समझ 25 टंका कहीं अधिक बिकी पारिबो नहीं कि 50 टंका कहीं अधिक बिकी पारिबो नहीं जो दुकानी बिकिबो ओबियसली पुलिस जीवो रेड करिवो राइट तेणु करके कारण सेटा बहुत दरकार पड़ गला जरूरी हो गला जिनसटा सेति तापर नले तो 200-500 टंका माने बिकी के एक्सप्लोर कर परिबो ना तो ये हैला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रो एसेंस मु तुमको कहितली सेमती सपोज आज भावुच तुमको आलू के 200 टंका बिकुची गवर्नमेंट जदि कहबा ठीक अछि आलूटा को मु एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रे 3 मास पई ऐड कर देली तापर कहि दो आलूटा 20 टंका तो समस्त 20 टंका बिकिबा बाध्य बुझ परछन सो दैट इज हाउ एसेंशियल कमोडिटीज डू एक्ट एबे बुझा पड़ियो एसेंशियल कमोडिटीज रो काम कोन राइट चलो फिर ये बुझा पड़ियो एसेंशियल कमोडिटीज रो मीनिंग हमें अच्छा आउ गोटे कोन रहि गेला हां ये रहला तमरो फूड एडल्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट अर्थात कौन जमती आम लेट से तुमको कहते अंडा देखला से आउ कौन मिसी जाऊँ प्लास्टिक तो ये हम देखिया देन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 अर्थात प्रत्येक पैकेज रे ना कोल्ड ड्रिंक्स पीबुछ सब लिखा ही आसो कौन कौन कंपोजिशन माने कंज्यूमर जानिबा दरकार ध्यान से सुनो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कंज्यूमर जानिया दरकार आ जदि कंज्यूमर को ठकिल ताले से तुमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आसी 2019 रे ताकि से तुम विरुद्ध रे केस करि परिबो कि देखो ये जिनसटा मु किनिथली ए मु ठकामीर शिकार हेछि तो से केस करि परिबो तो कंज्यूमर रो राइट्स देन वुमेन्स डे रिसेंटली जाइछि वुमेन्स डे 8 मार्च वुमेन्स डे and here is the some prominent women you can see Mithali Raj from the different spectrum ru diya jaichi from the astronaut to the musician maestro right obviously samast jancha Lata Mangeshkar to the finance ministers president also and Mithali Raj so these peoples they have not made the women proud but the India proud बुझ परछने एमने खाली इंडिया को प्राइड करनांती वुमेन्स को प्राइड करना दे हैव प्राइड द इंडिया
द प्राइड्स ऑफ इंडिया आम कहि परिबा राइट तो एमान को देखि परतो एंड पीएम आल्सो हैविंग सम डिस्कशन विद द so break the barriers and make the history तो women's can India women break the barriers and make the history तुमको लागू छी perception is what yes जदि तुम ये क्वेश्चन कहा को भी पचारिबो कि समस्ते कहबे more than what 76% or 70% peoples of India they will believe the women will break the cycle and they will come out to make something different yes or no आजकल देखि परबो बहुत बड़ा कंपनीज मानकर सीईओस कथा नहीं जाओ so women are also the so prime minister टिके कोट देखि दियो तांको कोट women's security our government's priority we amended laws to give death penalty for the crimes like rape pm then prime minister Narendra Modi marked international women's day with a strong message on the women's empowerment highlighting the key government initiatives aims at uplifting the women across the economy. In a speech delivered on this occasion, he said, declared that I am the most richest person in the world. PM कहले. Why? Because of the blessing of the millions of women. बुझ पड़छ ना? तो से कहले I am most richest person in the world because of the blessing of the millions of women, and that blessing could be देखा दीटा टर्म्स रे मु त नेबी आई वुड से ईदर दैट ब्लेसिंग इज इन फॉर्म ऑफ द वोटिंग के लेट्स से सुभद्रा योजना आसला एंड ओडिशा द बीजेपी इज रूलिंग ओडिशा एंड देयर इज व्हाट लाडली बहन and that scheme was started from the MP. The women politics started from the MP and where the BJP rightly captured the women voting powers there, and then it's Delhi रे मासो को केते 2500 ना केते दिया वुमेन्स मानो को 2500 yes so it's what the women's now the backbones of the BJP's government and same thing तमे बेंगल रे भी देखिवो ममता दीदी मध्ये सेमती स्कीम करके रखी छी जीव मन को पई बट कोन अछि ताकर बटे स्कीम टे अछि so the women's are now playing the roles major roles in the politics might be सही टर्म्स नहीं परिवो और मतलब पीएम को कोट को मु कहूची कि आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और स्पिरिचुअल फॉर्म रे मध्ये कहि परिवो तमे के स्पिरिचुअल फॉर्म रे एथि पई बिकॉज़ ही इज ए मतलब स्पिरिचुअल पर्सन बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन से निज मां को मध्ये बहुत भल पाउथले दैट कुड बी द वन ऑफ द रीजन हे पारे सो दैट इज व्हाई so here is some statistics of the women of India okay where the women stand so the women stands is here the 77.5% women that means in India and the 77.5 men in India that means तुम देखि परिबो had an account तो आज पर्यंत आमे कहबा कि जो वर्तमान अकाउंट कथा नहीं जो आगे once upon a times before 2014 I would say the women's didn't have bank account हाँ कि नहीं before 2014 now suddenly something came in 2014 that is the Jan Dhan and Aadhaar Yojana the Jan Dhan Yojana and that leads to the massive opening of the accounts across the nation and that is why the women are now having one of the highest banking account as compared to the male counterparts हाँ एटा monthly सेटा monthly 2500 in Delhi that to be monthly आमर जोटा दियो twice 5000 आमर कोन गोटे रहबो तमरो women's day and one would be on the occasion of Raksha Bandhan and this 2 day the women of Odisha will receive what 5000 each 10000 and 5 year kete jo 50000 but देखो sometimes government may increase that depends on them कहउछन तो 15000 they will on the occasion of Raksha Bandhan so that would be bonus मिलिबो right जाबियो सेटा कमी जीवानी as any questions comes from this area right the women's part जदी किछि भी question आसुची make it like this के now the women are having most number of accounts as compared to males counterpart more than 77% of the women are having the account that is the banking account that shows the women are coming forwards in terms of the business I mean the literacy the banking literacy will definitely go up obviously banking जो माने से माने bank को जिवे they will go to the bank to transact their businesses in the banks that means the financial literacy and the habits of the financial habits will also improve over the year and that makes the sense
and even the let's say you are having jemti PM Awas Yojana rural heiju ba urban, that would be in the name of the women of the house, not in your name, right? Tamman ko nare kisi hei paribani, right? So it would be not the male counterpart. Let's say Indra Awas Yojana, that's a Pahal Yojana, that is the gas jota me koche connection pai, all there would be required the women's account, not the men's account. There would be the women's, yes, and even the ration card would be also women's. That would be the elderly persons je bhi thibo women's meter, that could be your mother hei pare ba kimba ame ke ki je bhi thante, so that would be also on their name. So these things are there, right? So it ame dekhi pare one of the highest ame keba, so being one of the largest nation in terms of the highest population, so ये data को टिके मन रखो that 70 बर्तमान किंतु वुमेन्स मानकर अकाउंट अधिक जदि तुम लेटेस्ट देखबो दिस डेटा इज 2021 रो जहा मु खोजी थिली काली मिलला मते सेटा ही ऐड कर देछि, बट जति मु 2025 कथा नेबी वुमेन्स रो बैंकिंग अकाउंट अधिक आज कंपेयर टू द मेंस इन इंडिया। तो वुमेन्स एई जगह रे हम देखिबा आउट परफॉर्म करिछि मेंस को, एंड द लार्जेस्ट वुमेन एम्प्लॉयमेंट्स इन इंडिया 2025 लीडिंग्स। तो इंडिया रे जदि हम देखिबा 2025 रो वुमेन्स मानकर एम्प्लॉयमेंट मध्ये बहुत ही ज्यादा बढ़िछि, एडिंग approximately 1.4 million new jobs in 2025 तम देखिबो, and now enjoying 8.4 million individuals as 2024, and that would be what Burgant जोटा की गोटे प्राइवेट हुरन्स इंडिया रिपोर्ट टा जोटा देछि, एटा गोटे कंपनी टा गोटे से रिपोर्ट टा देछि, तांको रिपोर्ट रे से कहंती के 8.4 million individuals as 2024 they are employed। सेमती आमे जदि कहिबा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वुमेन्स हेल्ड 17% ऑफ द बोर्ड पोजीशन, माने आम देश रे जेते बोर्ड सब अछि डिफरेंट बोर्ड अछि, तो सेथरे मानकर पोजीशन हला 17%, राइट? प्लस आमे कहिबा 13 वुमेन्स हैव टेकन इनटू लीडरशिप रोल्स आमे नै जिबा। इन एडिशन 742 वुमेन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड्स, मतलब डिफरेंट जगह रे बोर्ड्स रो अछि, जेमति आमे सेबी रो कथा नै जाओ जो बुच्चा थिले ओबिसिल थांको नारे मतलब केसेस वगैरह, बट जहाँ भी हो आमे सेटा को करप्शन को तो जीविनी, बट वुमेन्स तो थिले ना, तो सेमती आमे केबा इंपोर्टेंट पोस्ट मान करे रहउचंती। देन सेमती लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखिबो, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 23.3 टू 41.7 इन 23-24। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो हैज इंप्रूव टू 41.7%, ये बहुत इंपोर्टेंट आपको मन रखिबो। एंड कह जाउछि कि जदि 50% वुमेन और 60% वुमेन जदि वर्क फोर्स पार्टिसिपेट करो तुमरो जीडीपी 1% ग्रो करिछबो। देन हम कहबा त थीम, देन हम थीम को आसीबा, थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। द थीम कोन? थीम इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ताले देखो द थीम फॉर द इंटरनेशनल वुमेन्स डे फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। थीम्स कोन देखो? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट, equality and empowerment. This is the theme of 2025 of Women's Day। तो ये थीम टाक भी तमे मन रखिबो, कोन थिला? For all women and girls, right, equality, empowerment। ये दरकार, समस्तों को ये दरकार। This year the theme calls for actions to unlock equal right, power and opposition and what opportunities for all and an inclusive future where no one is left behind। the inclusive future प्रति ध्यान दिया जिवो, एनविजन करूछ हमें जेमति कि एथरे समस्त को आसी जिवो। the theme call for the action unlock equal right, सेवन with the right powers opportunity for all and an inclusive future where no one is left behind, women's future रही जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट विजन रही। the central government visions to is empowered to the next generation youth, particularly the young women and adolescent girls। ते मन को एम्पावर करे बोली कहउचंती। so this is important, ये जो तळ लाइन टा पूरा important लाइन ही रही तम, राइट? this is very important। नेक्स्ट आबे जिवा, नेक्स्ट आसीबो T-72 अजय। ये कोन? इट्स अ टैंक गन देखि परिबो, इट्स अ टैंक। सो जोटा कि इजराइल सहित हमर कोन थिला, एक्चुअली डील हवा थिला इजराइल सहित, देन इजराइल सहित डील कैंसल है कि का सहित हैला रशिया सहित। ना दिस तुमको पचर कि जे T-72 काठु को देश ठु, इट इज फ्रॉम द रशियन फार्म। इट वुड इंडिया सिलेक्ट द रशियन फार्म टू बूस्ट द
mobility of nearly, that is what, 1000 T-72 agile tanks, right? ये जो T-72 अजय टैंक्स को आनिबा बे काटू रशिया ठु आनिबा। आलियर इटे इजराइल सहित डील हेतिला, बट हमें वर्तमान रशिया ठु आनिबा। किए कहचंती तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस द प्रेस रिलीज रे जोटा कि मार्च 7 रे कहचंती 2025 दैट इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड का सहित रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ROE सहित एग्रीमेंट हेछि। The Russian Federation ताली यार देखिबा ओथ केते that is USD हम कहबा 248 million for the procurement of 1000 SP engines for the T-70 tanks engine सब आसीबो और शायद एठी ही तयारी हे जिवो। The Indian Army reportedly has a fleet of 2400 T-72 tanks and 1000 of which are planned to be upgraded। बाकी हमको अपग्रेडेड करा जिवो। तो ये सब टैंक्स हमको रही ऑलरेडी टैंक्स बहुत अच्छी एंड ताको अपग्रेड मध्य करा जिवो। तो ये रशिया रहइबो। रशिया सहित जेमति तमर S-400 पचार थिला गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया? Which of the following is not a government initiatives for the women's empowerment in India? Option 1 is a Beti Bachao Beti Padhao, Shukanya Samriddhi Yojana, Startup India and Ujjwala India. Yes, try करो। ट्राई करो बाकी समझते। सी चल बे। So answer is what? C. So answer would be C. कविता, संजीव, विद्युत, ज्योत्सना, मानस, मोनालिका समझते C. Right. That would be C. तो ये रहे तुम सी ताले कहीं देख प्रथम है बेटी बचाओ ये समस्त जना पड़ जो कि सुकन्या ब्राइडल स्टार्टअप एंड उज्ज्वला भितर जब कन्फ्यूजन थी उज्ज्वला हूँ जो तुम गैस कनेक्शन रोचे ना तो से दैट इज फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट कारण से वुमेन्स ना अकाउंट खोला ये सब तुम बैंक खाता खोला से स्टार्टअप नॉट फॉर द वुमेन डेडिकेटेडली वुमेन नहीं देख ये जो तीन टा रहा दिस वन एंड दिस वन ये डेडिकेटेडली फॉर द वुमेन दिस वन इज नॉट डेडिकेटेड फॉर द वुमेन्स बाकी जो तीन टा तुम देखो दिस वन एंड दिस वन डेडिकेटेड फॉर द वुमेन्स पई डेडिकेटेड रही से उजाला तुम वुमेन्स जो घरे सब आम कहवा कि जो ओल्डेस्ट जे भी रहिबो तो तांको ना रे ही परिबो। एक मिनट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर द बोथ मेन एंड वुमेन? देखो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, हाँ कि नहीं इन केस ऑफ द गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट बिल्कुल भी नुह ना एमती ना के तो मुझे कीट्रे चाकरी करी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड आर्टिकल 39B is the right answer. So it would be what? Article 39B. The right answer would be article 39, sorry D. It's article 39D. So
It would be what? Article 39D of Indian Constitutions will be the right answer. So for the right to equals ways for the men and women, both case रे हम कहि परिबा right. चलो फिर जना तो पड़ी उसे कैंसिल कर दो तुमको जोटा मिलिबो सेटा जिवो आ कोन. So try to cancel out, right? Cancel बाकी गुडा तो जानि छ ना, this one right to life तो हेई परिबोनी cancel. This one got cancel. हाँ तुमको डाउट लागिवो कि यार इक्वल 16 टा काले आंसर हेई परिबो, डाउट टिके सेठी रहइबो. अच्छा ये हेइला जिबा थले आगु को. देन धारावी इशू आसे कोन, ये देखो वर्ल्ड तो नो एशिया's one of the largest हम कहबे slums किए धारावी, and that shares almost 30% of the GDP, 40% of the GDP of Bombay. Can you imagine? ये slum, the one of the largest, ये इंडिया रे तो largest slum no doubt. Also one of the ये बोधे एशिया रे largest slum बोधे, एशिया रे ना एशिया रे second largest slum बोधे. देखि दबो second largest overall. ये जो slum रही ची, ये धारावी slums, ये कौन इशू कहीं की न्यूज़ हम कही दी. आदानी गौतम आदानी धारावी स्लम्स को एठू उठेगी गोटे नुआ लुक दवापी चाहे से माने एठी जेतिकी लोक अछि सेमानकु भलो बिल्डिंग देकी गोटे गोटे क्वार्टर देकी रखिबो बोली से तारो प्लान करिछि. जाको हम कहबा आदानीज धारावी स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोउठी करिवो ना थाने पाखरे जो बॉम्बे पाखरे जो क्रीक अछि, थाने पाखरे जो क्रीक अछि से रीजन रे से करिवो कोठी थाने पाखरे जो क्रीक अछि से क्रीक एरिया रे से करियो बोली भाबी चंती, राइट? इन दैट क्रीक एरिया से किसी मैंग्रोव फॉरेस्ट मते खेती हबो. तो सेथि पई पिटिशनर जे अछंती से कहले ना ना एटा तो एनवायरनमेंट वायलेशन हबो, तो सेठी जदी से करिवो से जो मड फ्लैट एरियाटा अछि सेटा वायलेशन हबो, तो बेटर से सेठी न करंतु. सेठी न करिया पे सुप्रीम कोर्ट केस फाइल कराइछि कि गौतम आदानी सेठी न करंतु धारावी स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ताकू नहीं कि सुप्रीम कोर्ट रे केस हेइथला कि ये प्रोजेक्ट ये न करू और सही जगह रे न करंतु. सुप्रीम कोर्ट मना, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देले. सुप्रीम कोर्ट कहले नाइ नाइ ये किस बेकार कथा से तार करंतु, हमर सेति किछि कहबार नाही, एथि पई नाही बिकॉज एनवायरमेंटल लॉस रो सेमति किछि ग्रॉस वायलेशन नाही, एंड दैट वुड बी मिलियंस ऑफ पीपल्स विल बी बेनिफिट. आदर कोन हबो मिलियंस विल बेनिफिट, सेतु सुप्रीम कोर्ट ताकू स्टे लगैतले. तेबे हम देखिबा दैट इज व्हाट अदानीज धारावी स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट as challenged by the Amikwa Dubai based but Sinkling एडर है पाए challenged by ये ताकू challenge करथले, that is the Sinkling ये challenge करथले सुप्रीम कोर्ट रे. कारण तांकू भी दरकार साइड प्रोजेक्ट एटा भी हेइ थाई पारे हिडन एजेंडा कि हमको प्रोजेक्ट मिललानी, गौतम आदानी को प्रोजेक्ट मिलला, we would have developed that slums into one of the another Dubai. तो या को नै की इशू आस्तला त धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टिके देखि दियो. सो व्हाट इज धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो प्रथम कथा धारावी कथा मन रख. So this is the largest slum of India and where almost more exactly, though I can't remember the exact figure, but it would be at least 30 to 40% GDP is coming from the Dharavi. The Bombay's GDP is coming from the Dharavi. Why? एडी बहुत सारा तमें जानना बॉम्बे रे तीन टाइम मतलब इंडिया में तीन चीज चलता है, एक तो पॉलिटिक्स, क्रिकेट एंड बॉलीवुड. एबे तो बॉलीवुड गला टॉलीवुड बुझी परछ नै. ए सब टॉलीवुड से जहाँ करूँ 500 कोटी टका सब हो 200 कोटी टका तले तो तांको मूवी सब इनकम करूनी. आमर तो स्ट्रगल कर अरे लॉन्च करिया कि नहीं भाभी चिंती कर जाऊ ये छावा आसिक बंचे देछि आंको बुझिपारछ नहीं 500 कोटी टका इनकम कर देछि एज ऑफ नाउ. तो जा भी हो तो यांकर इकोनॉमी कौन तुम कह सर ये बॉम्बे रो इकोनॉमी को संभालुची धारावी. ये शुणिले टिके आश्चर्य लगे कि धारावी बॉम्बे इकोनॉमी को संभालुची. सत कथा यहाँ कारण 60% लोक धारावी रे रुहंती बॉम्बे रो. बॉम्बे रे 50 रु 60% लोक धारावी रे रुहंती. आ तुम ये जो स्लम देखु ना, ये स्लम अर्थात ये सब 2 महला 3 महला घर भी अच्छी ये स्लम रे. एमती ना कि सब जरी पालो घर ना. दिल्ली रे भी जमती शायद जो मैंने दिल्ली रे रही थी कि जमती सादीपुर एरिया ही गला, वेस्ट पटेल नगर ही गला. तो ये जो वेस्ट पटेल नगर पर जो सादीपुर एरिया सेठी सब बिल्डिंग मिनिमम 3 महला, बट सेटा गोटे स्लम, बट सेटा वन टाइप ऑफ स्लम मु कहबी, राइट? दिल्ली लोक तो ताको स्लम कहंती कहना वंस बुझ परछने. तो गली गुड़ा हिथो कि जमती गोटे 2-3 फुट चौड़ा हिथो गली, एमती जणे लोक आसीथिले आ जणे साइड हेले जीवो तो एतिकी गली हिथो बुझ परथबो. तो दिस इज हाउ के
तो से सादीपुर एरिया एमती सेटा भी गोटे वन टाइप ऑफ स्लम। तो ये सेमती ये स्लम रे बहुत मिलियंस ऑफ लोक रोचंती आ एठी जो लोक रोचंती माने करंती कोन देख ये बॉम्बे रे जिते बड़ बड़ लोक रोचंती समस्त घरे तो मेड दरकार खाइबा पिला को ये करबा देखभाल करबा सिक्योरिटी काम ये सब किए करिवो धाराबीरु जीवो ऑटो चलेबा गाड़ी चलेबा ये सब काम किए करिवो धाराबीर लोक करिवो म्यूजिक आर्टिस्ट हे गला जो तमे देखो ग्रुप डांस होची से ग्रुप डांस जणे तो हीरो जणे तो हीरोइन बाकी माने कोठु आसीबो से माने से डांसर दरकार कि नहीं से माने कोठु आसीबो धाराबीरु आसीबे जेते म्यूजिक शो चलची ये सब चलची इंस्ट्रूमेंट बजाउचंती ये सब करचंती से माने कोठु रहबे धाराबीर रहिबे बिकॉज़ दे कांट अफोर्ड द बॉम्बेज फ्लैट को तो से माने अफोर्ड कर परबेनी दे कैन अफोर्ड ओनली प्लस प्लास्टिक रिसाइकल हेगला छोट मोट इंडस्ट्री से कुरकुरु ठू आरंभ करी पानीपुरी ठू आरंभ करी ये जेते तमरो पेपर ठू आरंभ करी ये सब इंडस्ट्री एठी हाँ कि नहीं ये धाराबी सो धाराबी होची इकोनॉमिक हब आम से धाराबी होची गोटे बहुत इकोनॉमिक हब साइज जदि तुम मैंने जानी ए धाराबी कथा बुझी पार्थो तेणु करके आम कहबा सिग्निफिकेंस सेठी लिखाई तेणु ए धाराबी प्रोजेक्ट कथा मु आसीबी ते धाराबी प्रोजेक्ट देख आदानी याकू डेवलप करियो बोली आछि तो गौतम अदानी ग्रुप a reality development company Adani Properties emerged as the highest bidders in November 2022, securing the 80% of the stakes of the Dharavi Development Project Private Limited, with Maharashtra government holding remaining 20%. अर्थात this is private and government project. तले एथरे 80% Adani and 20% Maharashtra government मिसिकी develop करिवे. The project encompasses 600 acres of the land with redevelopment planned for the 296 acre while preserving open spaces like that is the Mahim Nature Park. Dharavi accommodates more than 8,50,000 residents and when considering the that is transient population this figures 1 million केते लोक रहउछंती एठी 1 million 10 lakhs भाबो भुवनेश्वर रे होची 14 लाख लोक आ धाराबी स्लम रे रहउछंती 10 lakhs एटा तो आउरी अधिक थिबो बुझ परछन आउरी अधिक कम होबनी आउरी स्लम अछि ना बॉम्बे रे धाराबी थोड़ी गोटे स्लम एमति केते स्लम अछि तो सबु स्लम मिसी जिवो ए 50% जीडीपी शेयर करतो बॉम्बे रो बुझ परछन जेमिति हमरो सबटु बड़ बस्ती कोन एटा जो अच्छी नयापल्ली पाखे कौन जो जयदेव विहार कौन को कौन सालियासाई भुवनेश्वर सब बड़ बस्ती किए सालियासाई जो कम से कम आम कह 20% 30% लोक भुवनेश्वर रोचंती से 3-4 लाख लोक से रोथे कम से कम 3 लाख खंडे तो लोक रोचे 2-3 लाख लोक तो 30 लगभग 20-30% लोक तो केवल से गोटे बस्ती रोचे भुवनेश्वर केते बस्ती थो more than 200 more than slums मु कहूची मिनिमम टा more than 200 slums अछि भुवनेश्वर तुमको लागियो यार गोटे दीटा बट 200 गवर्नमेंट फिगर जदि तुम चेक करिवो 200 तो मु बहुत कम कहूची एटलीस्ट 300 खंडे थिबो 300 slums दे आर इन भुवनेश्वर सेमती भाबो एते बड़ ताले बॉम्बे रे केते स्लम थिबो तो ये सब बहुत सारा स्लम्स अछि तो ये प्रोजेक्ट कथा हम देखितले जोटा कि ये रहबो व्हिच इज रैंक एज द वर्ल्ड 6th most densely populated. Next, Manipur किछि तमरो MCQs नहीं छी मु एबे सण सालिया साइरे जो इकोनॉमी तमरो जेते ओडिया आर्टिस्ट हे गला म्यूजिशियंस हे गला ऑटो वाला तुम जानचो भुवनेश्वर रे शायद 60% ऑटो वाला गोटे बस्ती रे रुहे सेटा होछि सालिया साइ राइट तांकर मेन बिजनेस आउ जेते पानीपुरी वाला सबू जाक बस्ती रे रुहंती समस्ते तुम इवन ए पानी बिहार पाखरे देखि परबो जो साइड पाचिर साइड रे जो बस्ती समस्त देखो पानीपुरी सिक्योरिटी गार्ड के तमर ओला चलाउची के उबर चलाउची तो ये सब सेमानकर इकोनॉमी चलची के डेली सकाल ने के टिफिन बिकिबा राइट दिस काइंड ऑफ छोट छोट बिजनेस करके से माने चलछन के बुक स्टॉल कर दबा के खेलना बिकिबा के बुझबो कहार डोमेस्टिक हेल्प करिबा जेंते मेड वगैरह आसुचंती रोसे करिया पी सब कोठो आसुचंती एठो आसुचंती सो दे आर आल्सो रनिंग इकोनॉमी आउ से माने न रहले भी इकोनॉमी चलीबन जे बट सेमान का कंडीशन को इंप्रूव करिया एमते ने कि से माने न रहंतु शहर रे से माने थांतु बट वी नीड टू इंप्रूव देयर कंडीशन केबुलान जाओ
The national parks of Manipur or in Manipur is famous for which rare animal? Sanjeev, it's a Bidut B. The answer is what? B. The answer is what? B. Answer is B. Asiatic lions गुजरात रे देखा जाए जानिछे. Snow leopards कोठी देखा जिवो. Snow leopards जदि तुमको देखिवो, this snow leopards will be in Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, JNK and Ladakh. That would be the snow leopards. That is not endangered नुह. बाकी ये सब जाक तुमरो शेड्यूल 1 रे आसीबो. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 रे सब जाक आसीबो. रेड पांडा कोठी देखा जिवो. रेड पांडा एनीवन? रेड पांडा दैट टू बी इन कोठी मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश. ये तुमको एठी देखे नॉर्थ ईस्ट रे, खास कर अरुणाचल प्रदेश. रेड पांडा इज फेमस अरुणाचल प्रदेश. एंड व्हाइट पांडा होची कोठी? चाइना. व्हाइट पांडा होची तुमरो चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चंस. So देखिबा, what is the official language of Manipur? Is Assamese, is Meitei, Bengali, Hindi or Kuki? कौन रहिबो? ट्राई करो. Is what? Meitei or Manipuri? Meitei or Manipuri? Manipuri is a classical language or not? Is it a classical language? Anyone? Comment. Next question for you. Manipur is known as the land of what? Is a white elephant, seven sister, jewels and the eternal mountains. Manipur is known for what? Is a seven sister? Is it 7-1? Is it white elephant? Is it jewels? Is it eternal mountains? Is known for what? This one is known for the jewels. The jewels. Manipur is called as the jewel of India. But this jewel is suffering from the violence since Amikava. What? Or for the it's been like year long violence. Again violence started. This lake, which lake is the largest freshwater lake of Manipur? Because samaste janicho questions kahi mu douchi, because Manipur is in news. That is the Loktak Lake, Dal Lake in Srinagar, and this Chilika is in Odisha, and Sardar Lake. Comment. Chalo fir. Here is incidents again broke out in Manipur. एइथिपाई मु MCQ नेइछि. देखा मणिपुर आम लास्ट टाइम देखी कि प्रेसिडेंट रूल्स इज बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर. एटा हम पढ़िला आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीन इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. व्हाट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जेतले इन्वोक करछंती, तो देयर इज प्रेसिडेंट रूल एज ऑफ नाउ इन मणिपुर. तो जेतले प्रेसिडेंट रूल लागू हैला, तो गवर्नर फास्ट समस्त को कहले कि भाई जो माने गोला बारूद धरिक बसथिलो, ये जो युद्ध करिया पे सब दे दिया, हमको सरेंडर कर दे, अदरवाइज the security force will take over. Security forces, because now central government forces will active. तो central government रो जो forces आसिक मणिपुर रे deploy हेगला चारियाटे, right? एबे government state government रो किसी रोल नहीं. ना central government decision नेले we will open all the block road by the किए करची जो cookies माने road block करची. ठीक है, एटा मु बुझाई दिए नल बुझा पड़िबो. ये देखा मणिपुर रो, this is the hilly region of मणिपुर. ध्यान से देखियो, these are the hilly region of मणिपुर. नल तमन को बुझा पड़िबो ने concept कोन होउची. देखा, these area are the hilly region of Manipur, but ए मझिरे रही तुम वैली ऑफ मणिपुर. ध्यान से देखो, ये जो वैली ऑफ मणिपुर जोठी रोची किए मेइटीज, एठी रुहंती किए मेइटीज. ध्यान से सुनिबो. सो हियर इज योर मेइटीज. तो ये जो मेइटीज माने एठी रहंती, आउ जे जो बड़ बड़ डिस्ट्रिक्ट देखो छ, एठी रुहे कुकी ट्राइब, कुकी एंड नागा. एठी रुहे देखो जोटा पॉपुलेशन मु कहि देछि अराउंड 53% हाउचंती मेइटी. मेइटी रो पॉपुलेशन अधिक, कुकी रो पॉपुलेशन कम. केते हम देखिबा, नागा आमे कुकी ट्राइब्स एमन को पॉपुलेशन कम.
किंतु एमानकर एरिया अधिक ध्यान से देख एतिक एरिया रे रहउची के 53% पॉपुलेशन छोटो एरिया रे के मेटिस माने होचंती जनरल पीपल जो मानकू शेड्यूल ट्राइब रो टैग दबारु ए सब कॉन्फ्लिक्ट हैला आ लार्ज एरिया रे रहउची के नागा एंड हम कह कुकी जो ट्राइब रहउची से माने 70% 60% लैंड रहउची किंतु पॉपुलेशन होची ओनली 30%। ए माने कोन कले जेतरे दीटा ग्रुप भीतर झगड़ा हैला ए जो ग्रुप रही जोटा कि मेटी रही ये मेटी यहीपटे क्रॉस करके तो जीव आसाम को ध्यान से देख यहीपटे जीव कि ना तो रोड को सब ब्लॉक करदे कहले ये भैल्यू एम बाहर को जावाई देवी ना किए कहले चारिपटे किए रही कुकी जो एंड नागा तो ये कौन कले ब्लॉक करदे कहले ये जो मझे जो अच्छी किए मेटी सहित आर पड़ो झगड़ा कहला मेटी को बाटे जीव ये रोड बाटे तो जीव बाहर को आउ तो जापर कहला सब ब्लॉक करदे मेटी को छाड़ा ना आसला मैंने मारिबा तो से तो झगड़ा ना तो से कौन है ये जो रोड सब ब्लॉक करची तो मेटिस मान गोटे उपाय एयर को यूज करवा आउ किसी उपाय ना ना ट्रेन रे जाई परियो ना बस रे जाई परियो एबे जीव केमती ओनली फ्लाइट रे ही वैली रु जदी बाहर की तुम कुआड को जीवार अछि एमाने एपटे गला तो रोड रे से धरिबे तो सेति पई एबे सेंट्रल फोर्स आसिला परे कोन कले सेंट्रल गवर्नमेंट कले ए रोड सब ब्लॉक हटाओ कहा को कहले कुकीज को बट कुकीज माने न सुनी बारू पुणी थर वायलेंस स्टार्ट हला ये वायलेंस रो फिगर देखो ये रोड को रिमूव करिया पे चाहउचंती हटाया पे जो मु तुमको ब्लॉकेट सब लगे कि रखी से पुणी एबे बुझा पड़ जो कांसेप्ट कोन चलो फिर इंडिया यूएसए ट्रेड को नहीं पुणी चलती इश्यू चली तब इंडिया कहला ठीक अच्छे आम तारीफ सब कमेद तुम भी कमेद जहाँ रेसिप्रोकाल कहुए आम पढ़ी थे बट जदि तुमको एथर क्वेश्चन आसो कि मुझे बाय 2030 वी आर आईइंग व्हाट 500 बिलियंस ऑफ ट्रेड एटलिस्ट $500 आमको ट्रेड करा बोले 500 तो 500 बिलियन 500 बिलियन ट्रेड हम बोल आमको टार्गेट अच्छे के बाय 2038 आगुरी पढ़ी आज ऑफ नाउ आमर ट्रेड केते होची $129 बिलियन जो थे इंडिया होची 77 सेमानकर होची 40 से ट्रेड डेफिसिट रही बोली ता मुंडो टेंशन कार डॉन रो सो दैट इज द रीजन समरी मु फटाफट कहीदेली तुमको समरी एंड दैट्स व्हाई सो देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट फॉर द यूएसए नॉट फॉर अस एंड दैट इज व्हाई दैट इज गिविंग द हेडेक टू द यूएसए दउची से ये चाहूची चेंज करने फटाफट एमसी को देखिदवा जिबा में What is the main governing body of the overseas trade relation between India and USA? India USA भितर जो ट्रेड गवर्निंग बॉडी रो कौन वर्ल्ड बैंक ना वर्ल्ड बैंक रो काम सब नुह WTO रो काम तो नुह से समस्त या करियो IMF नुह तो किसी बंची नहीं गोटे बंची USTR आ किसी बंची ऑप्शन रे तो आंसर वुड बी USTR राइट नेक्स्ट Which of the following agreement aims to enhance the defense trade between India and USA? Agreement. It's what? NAFTA बिल्कुल नो. NAFTA stands for North America Free Trade Agreement. तो NAFTA हबो नहीं B is cancel. Asia Free Trade Agreement ये cancel. SAFTA होची South America Free Trade Council. तो आंसर होची लेमोआ. आंसर हबो कोन लेमोआ. कारण देखिए NAFTA SAFTA एसो होची Free Trade Agreement. मु तुमको कहली NAFTA is for North America Free Trade Agreement. एटा कैंसल हबो नहीं. Asian Free Trade Agreement कैंसल. SAFTA होची South American Free Trade Agreement. ये भी कैंसल तो आंसर वुड बी लेमोआ. आंसर वुड बी लेमोआ. तो आंसर रहबो तमर कोन लेमोआ. नेक्स्ट चलो फिर सुप्रीम कोर्ट कोन कहि जे देखो एटा मु फटाफट खाली 2 मिनिट रे कहि देबा को बिल्कुल एक्सप्लेन करिबिनी खाली कहि देउची सुन देले मन रहि जबो. आज पर्यंत तुम जानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कौन है शुण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गोटे ब्लाइंड पिलाटा को कहले कि तुम जुडिशियल एग्जाम दे परिबो ना यू आर नॉट एलिजिबल टू अपेयर फॉर द जुडिशियल एग्जाम्स एमती होता मुझे तुमको कही ओडिशा रे मध्य ओडिशा रे सिविल सर्वेंट पई तुम जानिछ कि अंध पिला माने ओपीएससी एग्जाम दे परिबो ना एटा आम देखिले बट इट इज द पर्सन गोटे लोक आसिले चेंज कले सब किछि किए तांको ना कहितली मु The fast blind ways of Odisha किए सन्यासी भाई तो दैट पर्सन ओबियसली आसते तुम जान हमर जो इंटरव्यू प्रोग्राम होता वेस ऑफ आसुले है ना तो मतलब जो कंडक्ट होता वेस ऑफ राइट तो से आसुले तो जहाँ भी हो तो सेमिति मध्य प्रदेश कोर्ट कहले कि यार ब्लाइंड पिला जो मैंने अच्छा तो से माने जुडिशियल एग्जाम दे परिबन जेमती ओजा मतलब ओडिशा जुडिशियल एग्जाम्स OJS जहाँ को कहुए
तो कहले से देई परिबले सुप्रीम कोर्ट कहले ना ना से जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहितले कि ना तांको मां जाई पहुंचले कोठी सुप्रीम कोर्ट रे से पिलारो मां पहुंचले सुप्रीम कोर्ट रे अपील कले कि मो पिला को कहीं से माने ब्लाइंड हेले कोन तांकर किसी अधिकार नाही कि से जजमेंट देई परिबेनी कि तणु करी सुप्रीम कोर्ट कले the new era for the disabled rights in India सेठिपई कहिछि a look at how the Supreme Court that means what champions the disability rights in the mass third order clearing the visual impaired candidates eligible for the judicial services and striking down the discriminatory rules. So how discrimination रहिबो नाही एबे there would be no discrimination now that is RPWD Act जदि हम कहबा it is the right time that we review the right against the disabled based discriminations as recognized the right persons with disability act 2016 same nature रे तो ये तुमको समरी कहि देली राइट बैकग्राउंड्स मु तुमको बुझाई देछि ये तांको मां जाई कि पहुंची थिले राइट ये तुमको कहि देछि दिस वुड बी एंड थैंक यू एवरीवन।